Hello lovely students, welcome to Akash Baiju's NEET live channel. I am Pankuri, your botany teacher. Welcome to the class. पिछले हफ्ते मिले थे. I can see some of the regular students. Lakshay Shukla, hello. Mohammed, Ashish, can we run the comments? Dhruva, can we run the comments? Okay. So people, yup, Mohammed, I also hope you are in good health, you're happy. Most importantly, you're very, very happy. Lakshay, I'm good, thank you. Acha, can we do something about the AC? Can we reduce the AC? हाँ, मतलब cooler. Yeah. It's a little, I think some AC is off. हाँ जी बच्चों, settle down in the class very, very fast. जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, how do you settle down in the class? You. Okay, no, we have to make it more cold. More cold? हाँ, it's गर्मी है अभी यहाँ पे. It's hot here. Awesome, thank you. So we will take our notebooks. We will keep our pens ready. आज का topic is the final wrapping up topic of this chapter, which is secondary growth. लेकिन आज का topic where we study secondary growth, a short neat question. कोई टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, जैसे कि ऑर्गन एनाटॉमी yields one definite question in the paper. Similarly, the topic of secondary growth, because it is a very peculiar feature in the life of a plant. भाई प्लांट की का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं. They have this superpower to show secondary growth, which leads to the formation of some of the huge trees that you see. Yeah, so we will study. No, we'll have to do something about the AC. It's very hot here. Maybe the central temperature they can reduce. Achha. So, like I was saying, the huge trees, you know, you must have seen some very thick trunks of the trees with that very hard outer brown bark. Yeah, some of the bark is very good economically. It is used economically. So, वो secondary growth का aspect we will study today. Keep your pens and paper ready. I can see people joining in late. People come to the class at 7. Yeah. Sovik, Faisal, good evening. Shalam, what a beautiful name. Good evening. Tabriz, good evening. Thank you. Gorakhnath Paswan, good evening beta. Yuvraj Patel, hi, good evening. Welcome to the class. Copy और pen ready होनी चाहिए. फैजल, सुन लिया मैंने गुड इवनिंग. इफ़ यू कीप स्पैमिंग तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, द सिस्टम विल ब्लॉक यू. तो वो प्रॉब्लम ना हो तो बी वेरी कंजर्वेटिव, बी वेरी केयरफुल विद योर कॉमेंट्स. या डोंट जस्ट डू इट बिकॉज यू आर हैविंग फन. आमिर जावेद, गुड इवनिंग बेटा. वेयर आर यू फ्रॉम? आशीष इज पंक्चुअल. येस आई नो. And you should understand also everything. I want correct answers. Imtiaz Ansari, good evening. Ashish has attended each and every class of this chapter. I don't remember very much about morphology, but in इस chapter में तो ये हमेशा आया है. I hope you will understand anatomy the best in the country, and that will assure a rank for you. Madhumita, I don't know what that message says. Please put serious messages like NEET aspirants. Even if you don't feel that much serious, pretend to be serious. Fake it till you make it. Are socho, you are aiming to be future doctors. Yeah? I'm not saying you should have a long face, you should be serious, you should have no fun in life. No. But your questions and your comments tell me how your mind, how your intellect is growing. Yeah? So the exam is to filter out whether you have grown. Thank you so much. ब्रिजेश, मेरा दिल खुश कर दिया. नमस्ते बेटा. आई रियली लाइक नमस्ते मोर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग्स. आपको भी बहुत बहुत नमस्ते ब्रिजेश. चलो, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर? एसबी, पहली बात तो अपना पूरा नाम डालिए तो अच्छा रहेगा, राइट? दूसरी बात, ये मैं पहली क्लास में हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आई ऑलवेज टेल द इम्पोर्टेंस एंड वेटेज ऑफ द चैप्टर. सो दैट शोज दैट यू सी, आई टोल्ड यू, योर क्वेश्चंस टेल मी हाउ मच यू हैव ग्रोन इन द चैप्टर. ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है हाइट बढ़ना और
those physical aspects of growth. I'm talking about the growth in the subject. Manas, namaste beta. Saksham, good evening. Okay. Time is out. I don't know what you mean. Sushil Kumar, Pingo Prime. Pingo Prime, अगर आप spam करोगे बेटा तो system will retract you, will block you. मैं नहीं चाहती that anybody in this class gets blocked. This is your classroom, more than mine. चलो बच्चों लोग start करते हैं now. I want everybody to focus on the subject. आज की class में focus is very important, and those people who have been coming to the class as per their moods and fancies will not understand today's class. ये bouncer जाएगा. Okay. Agent Vansh. Hello. Samiksha, beautiful name. Imran Nazir has put some, he's very happy about nothing. Siddharth Arya, please start the session. That's what I'm here for. Okay, Mission IIT. Mission IIT, not the right place for you. मेरा मैथ से कुछ लेना देना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी फिलहाल तो कुछ लेना देना नहीं है. Okay, people, you're distracting me. Let's start the class. People who are regular for the class, उनके लिए तो आज की क्लास बहुत important है. जैसे कि कुछ नाम मैं देख सकती हूँ chat box में, who are fairly regular. So today we are going to study about the mighty secondary growth. मैंने आपको बताया था, in the life of a plant, primary growth is basically growth of the axis, growth in the length and the development of lateral appendages on the stem. Makes sense? Now, plant also undergoes secondary growth. And we say that the growth in plant is very nicely indefinite because meristematic tissues जब चाहे divide करके growth करवा सकते हैं. Now, secondary growth is the growth in the girth, sideways, मोटा होना. After the plant has attained its height of the axis, the vegetative organs are fully developed. The appendages are developed on the stem, the mother axis. ये सब शब्द आपको बहुत familiar होने चाहिए because I've been repeating them class after class. Yeah? The plant can decide, dicot plants especially, gymnosperms also decide to increase in breadth, in girth. Yeah? So that is your secondary growth. And that is why in dicot stem you get a thicker woody stem. Yeah? So you call them woody stem because as a result of secondary growth, the amount of wood increases. In the first class of this chapter मैंने आपको एक बात बताई थी that wood of a plant, जिसको काट कर हम furniture बनाते हैं, commercially use करते हैं, the wood that we appreciate in a plant is actually the secondary xylem. वो सारा जो पेड़ काटा जाता है to get the wood and sell it off, that is secondary xylem. Monocots में, क्या grasses में आपको woody stem दिखती है? नहीं. So monocots don't care about this secondary growth very much. With me on this. Now, I told you that the meristematic tissue, first class में, when we classified meristematic tissue, I told you categorically that the meristematic tissue responsible for this increase in girth or secondary growth को हमने एक नाम दिया है cambium. सबको ये बात याद है? अगर ये बात भी याद नहीं है, फिर तो पूजा पाठ करने का ही टाइम है और nothing can help you. Yeah? And children, I tell you, none of the subjects, whether you care about understanding physics, chemistry, biology, zoology and botany, anything, what makes you a ranker is your consistent, is your how regular you are to any source of information, any platform you take the class from, any book you read, how regularly you brush up yourself. इसीलिए हर क्लास में मैं बोलती हूँ, please subscribe to the channel. Stop your guest appearances. You're not taking it seriously. Okay? So, subscribe to the channel so that you don't miss any class. जब भी class plan हुई, मैम ने class
प्लान करी, आपके दिमाग से निकल गया बिकॉज यू गाइज हैव होमवर्क्स एंड so many assignments to solve and some 4 subjects to deal with, you get notified and you share the session, you share the information of the channel with your friends so that you get motivated. एक को याद नहीं है दूसरे को याद आ जाएगा या कि चल आज तो क्लास है सेकेंडरी ग्रोथ, हमें बुक पढ़कर एनसीईआरटी पढ़कर बिल्कुल इट्स ब्ला, इट्स एब्सोल्युटली स्पैनिश देयर, आई एम नॉट गेटिंग इट, सो we'll attend ma'am's class and we'll understand the topic. That's a fair chance. We're lucky to have that chance. So to motivate each other, to keep on going in that plan. It's not easy to follow a plan for 2 years. This feat, this path that you have chosen is not an easy path. If somebody has told you, "Arey, बहुत easy है, बैठे रहो, just don't do anything and you get selected to be a future doctor," well, they are lying to you. You're misguided. It is a difficult path. And we teachers come here to tell you the strategies, to tell you the tricks to ace it, to make it happen for yourself. And mark my words, it does not require an intelligent student to do that. वो stories तो निकाल दो. मैं तो 10th तक topper नहीं था. I was among the last 10. I can't do it. Anybody can do it. If you follow the right steps and you don't give a guest appearance here and spam the chat box, that's not going to help anybody. That's not, I'm not going to care about it, and it's definitely not helping you out. Okay? Now, people who have been regular for you, you know that I gave you a name, cambium. Yeah? And I said that these are, according to the positioning also, we classified meristematic tissues as apical meristem, intracalary meristem, and lateral meristem. So these are the lateral meristematic tissues. तो ये सब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अराउंड बात करूं, आज का जो कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी ग्रोथ, देन दीज टर्म्स लाइक लैटरल मेरिस्टम, कैम्बियम आर ऑल synonyms. Yeah, you should be very well aware of this. So it is observed, mark this today, this phenomenon of secondary growth is a feature of dicot plants. Ab cambium is of 2 types, vascular cambium and cork cambium. मैंने आपको ये लिखवाया था, vascular cambium and cork cambium, and then I told you forget all about it. In this case, it is good to forget about it. Today is the class where we dig deeper and actually get to know कि ये चक्कर है क्या, what is vascular cambium and what is cork cambium. Now, as the name suggests, let's deal with vascular cambium. It is that lateral cambium which is going to form. It is that lateral cambium, यानी कि side वाला cambium, which is going to give secondary vascular tissues. Secondary vascular tissues. आपको पता है जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है ना, आपने मेरे साथ सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे. सिंपल परमानेंट टिश्यूज, they were making the ground tissue system. जिसने क्लास अटेंड की है उसको पता है, बाकी सब लोगों को ये नहीं समझ में आएगा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वर द कंडक्टिंग टिश्यूज. आप आज मेरे साथ देखोगे कि प्लांट का मेजर मोटिव डाइकॉट प्लांट्स का सेकेंडरी ग्रोथ करने का मतलब है टू फर्निश मोर एंड मोर सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज. ऐसा बायस्डनेस क्यों? क्योंकि जब प्लांट बड़ा हो जाता है, as it is going further in its course of life, it decides कि भाई मुझे कंडक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राउंड टिश्यू तो है ही, लेकिन अगर मेरे पास जाइलम और फ्लोएम और नहीं बने तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा. आई नीड more and more vessels and tracheids to conduct water and minerals from the ground. और usually ना ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो बड़े बड़े पेड़, इतनी बड़ी बॉडी में कंडक्शन बिकम्स, प्लांट को समझ में आ जाता है. एवरी ऑर्गेनिज्म बोर्न ऑन दिस प्लैनेट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन. उसको समझ में आ जाता है कि हो ना हो सर्वाइवल के लिए मुझे कंडक्टिंग टिश्यूज को और बनाना बहुत जरूरी है. तो वैस्कुलर केमियम को काम ही यही दिया है कि तुम अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाओ. इस कहानी में एक कैच है. आई टोल्ड यू दैट all types of cambium
are secondary. I said use it as a synonym. Well, I was lying to you. I was not exactly lying to you, but there's an exception to this case. This by far is the favorite concept of secondary growth. और NCERT की अगर मैं बात करूं, जो मेरी बहुत फेवरेट बुक है, वो इसको बहुत ही पहेली बुझाकर चली जाती है. Now understand this carefully, that vascular cambium is of two types. What do you see right in front of you? Interfascicular and intrafascicular. अब इन दोनों को समझने के लिए, कॉक केम्बियम की बाद में बात करेंगे, इन दोनों को समझने के लिए हम एक स्मार्टनेस करेंगे. हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम को पढ़ेंगे, एंड दैट विल मेक अस क्लियर कि ये मैम क्या बोल रहे हैं कि आई लाइक टू यू, दैट नॉट ऑल केम्बियम्स आर सेकेंडरी इन ओरिजिन. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम थोड़ी सी रिविजन करते हैं. आपने डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर में ऑर्गन एनाटॉमी जो हमने आई थिंक लास्ट क्लास में की थी, राइट, उसमें मैंने आपको बताया था हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्राउंड टिश्यू के पेरी साइकिल पे आ जाते हैं. ये आपको जो ग्रीन वाला सर्कल आउटरमोस्ट दिख रहा है, आई एम गोइंग टू मार्क इट पेरी साइकिल. पेरी साइकिल के बाद सेंट्रल रीजन, मुझे पेन चेंज कर लेना चाहिए, मुझे लगा मैच कर रहा है, सो आई यूज्ड इट. Okay, people, pay attention. Help yourself by paying attention. Nobody can help you in that. It's your attention, your hard work. Central region, core region, जो बहुत well developed होता है डाइकॉट स्टेम में, ध्यान से सुनना, उसको मैम ने बताया था कि इसको बोलते हैं पिथ. सही बात है. अब पिथ के अराउंड एक लाइन बोलती है एनसीईआरटी, रिंग टाइप अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम. बिल्कुल सही बात है. ये एक वैस्कुलर बंडल है, राइट, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि पिथ की तरफ होता है जाइलम और पेरीसाइकिल की तरफ आउटवर्ड्स होता है फ्लोएम. पिथ की तरफ होता है जाइलम, आउटवर्ड्स पेरीसाइकिल की तरफ होता है फ्लोएम. जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम. क्योंकि ये एक साथ हैं, हम इनको बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स. उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई गई थी, उसमें मैंने सिर्फ एक चीज छुपाई थी आपसे, राइट. मैंने आपको ये बोला था दे आर ओपन वैस्कुलर बंडल्स, दे आर ओपन वैस्कुलर बंडल्स. और मैंने आपको ये भी बताया था दैट दे आर ओपन वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ केम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. अब ध्यान से सुनना, दिस strip of cambium or rather patch of cambium, देखते जाओ और सुनते जाओ, is present when the stem is young. That is this strip of cambium which is called intrafascicular cambium. Why is it called intrafascicular cambium? क्योंकि वो एक ही vascular bundle के बीच में है, between xylem and phloem. This patch of cambium is primary in origin, is primary in origin, primary in origin. यानी कि in young stem, in young stem, इसको एक बार इग्नोर कर दो कि medullary rays क्या बनाती हैं. Just focus on what is intrafascicular cambium. I'm telling you, you will not get this. आपकी NCERT बोलती है in young stem, a patch of vascular cambium is present between xylem and phloem. Yeah? And later on it forms a continuous ring. इसका क्या मतलब है? वो देखेंगे. So, I want to tell you that intravascular cambium is an exception to what I spoke to you. That cambium is the name of secondary meristems. इंट्राफैसिकुलर केम्बियम उस वक्त एक्टिव नहीं होता है जब स्टेम यंग होती है, जब वो हर्बेशियस होती है, वो पड़ा रहता है. बट एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये केम्बियम, क्योंकि केम्बियम की नेचर है मेरिस्टेमैटिक, वो डिवाइड होगा और अपना काम करेगा. इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब क्या करेंगे, मैं इस पिथ को आई रब इट ऑफ एंड अगेन रिवाइजिंग द सेम विद यू. मैंने आपको बताया था that this pith from here extends as
parenchymatous cells. Yeah, these are called as medullary rays. Okay, I'll mark it. These are called as medullary rays. What is the nature of medullary rays? They are parenchymatous. And they are involved in the radial conduction of water, minerals, organic substances. ये बात सबको याद है? Medullary rays are the parenchymatous cells. Because they are extending as rays, we call them medullary rays. Why medullary rays? Because पित्त को medulla भी बोलते हैं, the centermost region. अब जरा देखो दोबारा से. The cells of medullary rays. With me, everybody. The cells of medullary rays adjacent to intrafascicular cambium. This is your intrafascicular cambium, primary in origin. The cells of medullary rays adjacent to intrafascicular cambium will become meristematic again and form interfascicular cambium. Why interfascicular cambium? Because they are formed in between the two vascular bundles. भाई आपके स्कूल में जो कंपटीशन होता है उसको that is within the school, intra school competition. अगर दो स्कूल्स के बीच में होता है दैट इज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, एनी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और समथिंग. तो बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स अब मेड्यूलरी रेज के ये वाले सेल्स बोलेंगे कि यू नो वी आर गोइंग टू डिवाइड अगेन, हमारी तो डी डिफ्रेंसिएशन कर दो. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 क्लासेस में रिपीट करवाया, 3 क्लासेस में. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन विच सम्स अप द लाइफ ऑफ अ प्लांट. अब अगर वो क्लास किसी ने मिस करी है then you will not get it. Alright, you should perhaps watch those classes again. Clear है यहाँ तक सबको? अब interfascicular cambium और intrafascicular cambium will form a continuous ring, and this is your ring of vascular cambium or simply the cambial ring. कोई शिकायत यहाँ तक? So now you know very important hidden concepts कि पहली बात interfascicular cambium is secondary in origin. Interfascicular cambium is secondary in origin because it is formed later by the process of dedifferentiation of the medullary rays. Intrafascicular cambium is primary in origin. Cool with me? Yeah? So if you are writing, those of you who are working hard, लिख लीजिए इसको कि इंट्राफैसिकुलर केम्बियम इज अ पैची केम्बियम, या प्रेजेंट बिटवीन, लुक एट दीज वर्ड्स, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. तो जाहिर सी बात है कि जो केम्बियम, जो भी टिश्यू प्राइमरी टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है वो कैसा होगा? वो प्राइमरी इन ओरिजिन होगा. उसके बाद इसने क्या किया? इसने मेड्यूलरी रेज, इसने इंटरफैसिकुलर केम्बियम के साथ मिलकर इंटर प्लस इंट्राफैसिकुलर केम्बियम विल फॉर्म द cambial ring. It's written here. Yeah? अब क्या होगा? Let's study the activity of the cambium ring. हमने क्या किया? इस सर्कल को, जो आपने अभी यहाँ पे सर्कल देखा है, let's go back here. इस पे ध्यान दो. Now we are cutting a slice of it. जैसे केक की स्लाइस काटते हैं, we are cutting a slice of it to and magnifying it for you to study the activity. Cambial ring is biased towards the formation of xylem. This is your cambial ring. I'm going to highlight it for you for a better visual experience. ये मेरी cambial ring है. The nature of this cambial ring is meristematic tissue. Meristematic tissue divides. उसको और कुछ नहीं पता है. It knows how to divide. So this ring is going to grow, become multi-layered. On the inner side, it will keep forming xylem. Already on the inner side, primary xylem is present. So primary xylem appears like conical projections. And उसके ऊपर, the xylem formed by the ring of vascular cambium is your secondary xylem. This is 10 times more
The amount of secondary xylem formed is 10 times more than secondary phloem. So vascular cambium दोनों साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड डिवाइड करेगी. इनसाइड का मतलब पित्त की तरफ, आउटसाइड का मतलब एपिडर्मिस की तरफ. अगर मैं दो एक्सट्रीम्स की बात करूं, outside, what is the first thing outside? Epidermis. What is the last thing inside? Pith. Is that clear? So vascular cambium ki ring will form secondary xylem. Here is your primary xylem. Then comes your secondary phloem. Look at this secondary phloem. और बिचारा सबसे बाहर you will have your primary phloem. और प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर you will have the other layers. Yeah, you will have your pericycle, you will have your endodermis, cortex, whatever the stem contains. Now people, a realization. I want you to realize, to understand secondary growth in dicot stem, let me make you realize something. Are you attentive here? This was my vascular cambium, very active meristematic cells. Over time, this ring of vascular cambium, which is meristematic in origin, meristematic cells don't have intracellular spaces, they are thin walled, they are aggressively dividing. No problem. This is your vascular cambium. This vascular cambium is going to make a lot of xylem. Xylem, full of xylem. It is 10 times more. Okay, and what is this xylem, people? See, I am writing this just to make the theory and diagrams easy for you, so that when you read, from wherever you read, it becomes easy. अब इस सेकेंडरी जाइलम के नीचे जो पुराना पड़ा हुआ जाइलम है वो बेचारा प्रोटेक्टेड रहता है, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी जाइलम अच्छी तरह प्रोटेक्टेड है, बट ऑफ कोर्स सेकेंडरी जाइलम इज मच मोर इन नंबर, मच मोर इन अमाउंट इन अ ओल्ड प्लांट, इन अ ओल्ड स्टेम. तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी जाइलम है, जिसको मैंने बोला कोनिकल प्रोजेक्शंस. कुल रियलाइज दैट दिस जाइलम which is accumulating, this xylem which is accumulating is going to put a lot of pressure on the secondary growth. Happens from inside to outside, inside to outside. Inside मतलब पित्त से इधर एपिडर्मिस, ओके? और वैस्कुलर केम्बियम की आउटर साइड पे, दिस इज द इनर साइड ऑफ वैस्कुलर केम्बियम, ओके? सो आउटर साइड ऑफ वैस्कुलर केम्बियम हम क्या करेंगे, हम इसको प्यार से, व्हाट विल बी ऑन द अदर साइड, देयर विल बी सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम जितना तो नहीं बनेगा, राइट? और सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर हमारा थोड़ा सा बेचारा प्राइमरी फ्लोएम. Honestly, I tell you, primary phloem is sometimes absent. It gets crushed. You will never see a well differentiating, well, अच्छे से demarcated, differentiated primary phloem. You will see patches of primary phloem, or it will be absent, because यहाँ से inside to outside बहुत धक्का लग रहा है. There's a lot of pressure generated by xylem. Okay, lot of secondary xylem puts a lot of pressure on the peripheral layers. Ultimately, as the plant ages, this epidermis here is going to get damaged, and what you get here is break in epidermis. Okay, so you get damaged epidermis. That is why in the first class itself, and one of my favorite questions, most of the wood of the plant, जब plant बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसके पास ज़्यादातर जो बचता है फ्लोएम तो बहुत ही कम होता है, उसके पास बचता ही जाइलम है. ये सारा क्रश कर देता है. Okay, just realize this. Now, one thing, a previous year question, very very important. Vascular cambium kept on forming xylem, kept on forming phloem.
in this sequence. This was very good for the vertical conduction of organic substances and water. And then the plant realized कि radial conduction करनी बहुत ज़रूरी है, जो primary medullary rays तो कर ही रही थी. So vascular cambium says, okay, fine, I absolutely get it. We will form secondary medullary rays. I should stop using this pen today. I should make secondary medullary rays. So please write it down. Some cells of vascular cambium, not all, क्योंकि कुछ cell तो busy हैं to form only xylem and phloem, secondary xylem and phloem. Some cells, right? You don't have to do the fusiform initial, reinitial. Some cells of vascular cambium form secondary medullary rays. Again, for the radial conduction. So, this is a very usual question. What is the product of vascular cambium in dicot stem? And we often miss secondary medullary rays, and then you go for negative marking. That's all that happens. So this is a rank booster question if you're writing. Secondary vascular cambium will not only give you secondary xylem and secondary phloem, it will also give you secondary medullary rays. इनकी nature parenchymatous होगी. इनकी nature कैसी होगी? Parenchymatous होगी. With me? So for the last time, look at the sequence of tissues and realize what is happening in secondary growth. Okay? So what was happening? Inside to outside. Inside to outside. The force, the pressure of the newly formed tissues is from pith to the epidermis. Pith to the epidermis. Repeat it 10 times. And then the concept of secondary growth becomes easy. All the students complain about secondary growth. It is the way you study it. Study a concept. Okay? So this is your pith. Pith के around सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? Inside to outside. Protected छोटे छोटे primary xylem. कहाँ गया primary xylem? Here it is. Okay? इसको मगअप करने का फायदा नहीं है. क्वेश्चन गलत होगा ही होगा. मगअप करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी. उसके बाद मिलेगा मुझे secondary xylem, which is going to become thicker and thicker as the plant ages. Secondary xylem is the major tissue. Vascular cambium जो बना रही है. Okay? Secondary xylem. No problem. Then comes the ring of the vascular cambium. आ गई? This is the next one. You can write the sequence if you don't want to draw the diagram. ये आ गई cambial ring. I'm marking it with red if that helps you. उसके बाहर, these are the usual MCQs. What is immediately outside the ring of vascular cambium? फिर एग्जाम सेंटर में सोचते रहते हो xylem, phloem, secondary, primary, negative marking or leave the question. बाहर प्राइमरी प्लांट में अगर प्राइमरी फ्लोएम था तो अब वैस्कुलर केम्बियम उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए बाहर जाइलम बनाएगी और उसको बोलेंगे सेकेंडरी, बाहर फ्लोएम बनाएगी और उसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम. Okay, so you get secondary phloem outside the vascular cambium. And lastly, I have the primary phloem. ये हमारी पेरीसाइकिल है. पेरीसाइकिल की तरफ, पेरीसाइकिल से जो सबसे पास है, that is your primary phloem. Are we good? Primary phloem जो बेचारा क्रश हो जाता है या पैचेस में प्रेजेंट होता है, उसके पास जगह ही नहीं है, उसके पास जगह ही नहीं है, उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर है. And lastly, in between the vascular bundles, you also have the medullary, secondary medullary rays. Ab, like I told you, it's not happening in a day or two. As the plant ages, epidermis will be damaged due to the pressure of the increased formation of inner secondary vascular tissues. गोरखनाथ बेटा, re-watch the session, play it again. I'm anyways repeating everything again and again.
हाँ आशीष, देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना ये बात, फ्लोएम खाना कंडक्ट कर रहा है, ओके, लेकिन खाना बनाने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। एंड एज द प्लांट एजेस ना, उसकी स्टेम बहुत ज्यादा विड्थ में, थिंक ऑफ अ वेरी ओल्ड ट्री दैट यू हैव सीन, ठीक है। अब for photosynthesis also, for the formation of organic compounds also, for anything in the plant, plant realizes that I need conduction of water and minerals more than the phloem जिससे food का conduction हो रहा है. That's the way it is. ठीक है आशीष, good question, makes me happy. Your questions tell me, your comments tell me what you are doing sitting there, wherever you are sitting. चलें आगे. Confident, मजा आ रहा है आशीष? Little bit confident. अगर तुम इस क्लास से पहले, you know, you should experiment this. पता है कि क्लास में we give you the notification, secondary growth होने वाला है, उसको टेक्स्ट बुक से पढ़ो. You will understand the difference. कि क्लास के बाद every line, every word in the textbook starts making sense. I'm talking about NCERT. Okay? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आशीष, xylem is majorly a dead tissue. Okay? And it provides much more mechanical support than phloem. तो प्लांट को लगता है कि मेरे पास सपोर्ट भी मिलेगी, right? I'll have a lot of mechanical support. Xylem can store a lot of substances in the dead tissues. And water conduction भी होगी. अच्छा, coming to the damaged epidermis. अब तुम्हें अगर याद होगा कि डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे होती है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद होता है स्टील, सॉरी, I'm so sorry, this entire thing. Endodermis. स्टील पता है ना, आफ्टर एंडोडर्मिस जो टिश्यूज होते हैं वो स्टील होते हैं. अभी तक हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ वाज हैपनिंग इन द स्टील रीजन. यस, एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाद है पेरीसाइकिल. ओके, दैट इज द स्टील रीजन. अब एपिडर्मिस और ये सारी लेयर्स डैमेज होना स्टार्ट करती हैं. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज either the hypodermis, which is collenchymatous and dicot stem, or mostly cortex. Middle cortex of the stem is parenchymatous. अगर ये याद नहीं है, my sympathy. Okay? तो उसके नीचे कुछ सेल्स, या तो collenchymatous सेल्स हाइपोडर्मिस के, या कॉर्टेक्स, मोस्टली कॉर्टेक्स होता है. कॉर्टेक्स के सेल्स जो कि पैरेनकाइमेटस थे, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन. इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट 3 क्लासेस में बताया था, सो दैट टुडेज क्लास बिकम्स अ केक वॉक. They volunteer, they say, no, if epidermis is damaged, anything can enter here. Any microbes, any insects, any infection. Plant will easily get infected. Epidermis is the protective layer. Okay? So we get another type of secondary meristematic tissue. दोबारा से color change किया जाए. Why am I doing this here? Actually, that's my favorite color. So यहाँ पे कॉक कैम्बियम मिलेगा. क्या है ये? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. गुड, वी आर गुड. अब इसका तो काम है डिवाइड होना. So this cork cambium, I'm going to make it cells for you. This cork cambium, which was a single layer, becomes multi-layered. आपकी NCERT में बड़े प्यार से लिखा है, it becomes, it's a multi-layered structure, cork cambium. तो ये क्या करता है? अब ये ग्रोथ कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है. So it will try to repair the damage, to repair the damaged epidermis, to repair damaged epidermis.
Is that clear, people? Yeah? कैसे रिपेयर करता है? On one side, this is cork cambium. ये cork cambium है. This will also divide on both the sides. On the outer side, आशीष ध्यान से लिखना ये. This is a previous year question. All the regular people, just taking his name. Rajni, please say hi later to everyone. Don't distract people who are trying to study. Okay, Ashish, yellow color is more clearly visible. I'll use that. ठीक है. So on one side, it forms these big cells, which are dead cells. Yellow is visible. I'm going to use yellow. This is called as एजेंट वंश. जो भी तुम काम कर रहे हो, FBI एजेंट, CBI एजेंट, व्हाटएवर, NCERT एंड लेक्चर इज इनफ यार. ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो. वंस वी हैव बीन हियर सिंस सो लॉन्ग. ओके, सो ये जो डेड सेल्स हैं विच विल prevent the entry of microbes, or anything which is harmful for the plant, those are called as cork cells. Cork is used as a stopper on wine bottles because cork की जो walls हैं they are suberized. इसकी walls में waxy substance called suberin is present, which is impervious to water. Okay, so suberized walls of cork. Are we clear? तो अगर यहाँ से if anything enters through the ruptured portions of epidermis, it will be stopped by the dead cork. On the other side, it will, this is the cork cambium, the multi-layered cork cambium people. कोई single layer नहीं है, multi-layered है. On the other side, it will form secondary cortex. आपकी NCERT में लिखा rectangular cells, cork cambium. Okay. On the other side, it will form parenchymatous cortex. But since it is formed later, it is called secondary cortex. Cortex की प्राइमरी फेज में क्या नेचर थी? पैरेन्काइमेटस. सेम रहेगी. Is that clear? So this is a very, very important question. On one side, it forms cork. On the other side, it forms secondary cortex. Now, people, this problem was taken care of. मुझे तो डायग्राम से ही समझ में आता है. See, when you know the subject, अपने आप आपका हाथ चलेगा. This is one of the ways to see whether your preparation is on the right track. When you see the concept, you start drawing something, you start scribbling something. That is when you are in tune with the concept. That is when you're not a rattu tota. Okay, so ये suberized cork तो मैंने बना दी. This cork is called as phellem. Question number 1. I've seen this question too many times, too many times in the previous year papers. Okay, this is called phellem. So immediately after epidermis, क्या मिलेगा? After secondary growth has happened, you will find phellem. Choices में दिया होगा cork cambium, phellem, phelloderm. खत्म हो जाता है दिमाग if you have not understood this and try to mug up the sequence. अरे भाई जाहिर सी बात है, मुझे एपिडर्मिस, टूटी हुई एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं एक दरवाजा जो लगाऊंगी, it cannot be meristematic cork cambium, people. It has to be something dead and tough. That is cork. दूसरी साइड पे उस बेचारी ने डेड नहीं बनाया है, उसने सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाई है. ओके, और इन तीनों को बोलते हैं पेरिडर्म. दिस इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक, द बिग शाउट अबाउट द फंक्शन ऑफ कॉक कैम्बियम. अब हम क्या करेंगे? लाइक आई ऑलवेज डू,
रैंक बूस्टर क्वेश्चन टाइम। तो जो लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं लिखेंगे कॉक केम्बियम, ओके, राइट। On the outer side, point number 1, on the outer side it forms cork. On the inner side, फटाफट, it will form secondary cortex. Cool? Are we good here? Now what will happen? Cork cambium is forming structures. It is yielding structures. Formation of something in biology is called as genesis. The wise ones will get it. It is called phylogen. Cork is called as phloem. Please don't forget it is dead. And secondary cortex is phyloderm. Please don't forget it is living. भाई मुझे अगर और फंसाना है ना क्वेश्चंस में, देखो बायजूस में वी डोंट कैटेगराइज स्टूडेंट्स की, इन स्टूडेंट्स को यू नो दे कैन नेवर सॉल्व एम्स लेवल पेपर, एम्स लेवल क्वेश्चंस. सो वी आर प्रिपेयरिंग, वी ट्रीट एवरी स्टूडेंट इक्वल. So we are preparing you for even the difficult questions. Okay? So थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि what is a dead component, what is a living component, and it is very easy for anybody to do this mistake if you don't pay attention. So remember, cork cambium is not forming only the dead cork, it is also forming the secondary cortex, which will be parenchymatous in origin, in structure. Cool. Now lastly, let's wrap this up. Phylogen plus phyloderm plus phloem, this entire structure which is a consequence of cork cambium, or rather I have cork cambium in this, right? Or you can say this is the, will not say this is the consequence of cork cambium, we'll say this is the secondary growth in the extrastellar region, outer region, okay? This is called as periderm. And this is a feature of your woody stems. अगर आपने secondary growth in stem समझ ली, you've understood everything. Okay? So cork cambium is phylogen. On the outer side, it cuts off cork or phloem, that is, it forms. Inner side, it forms secondary cortex or phyloderm. I've already told you. Now, what is bark? What is this brown, easy to break portion that we see in these huge old trees? First of all, bark is an informal term, okay? And I've heard many people saying that bark is the term given to the dead tissues. Absolutely wrong. Next time, and you will find people teaching this. तो बोल देना कि वो गलत बात है. Bark, what is bark? Let's define bark. Your textbook clearly says, I'm not saying this, this is the fact. Everything outside vascular cambium. अब आशीष बोलेगा अभी अभी आपने पढ़ा है पेरिडर्म, लक्ष्य बोलेगा अभी अभी आपने बोला है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगी, कॉक बनेगा, एपिडर्मिस का रिपेयर होगा. तो ये जो सारा गाना था, इसका मतलब ये तो बाक का पार्ट है. You are right. If you are listening properly, this should happen. This sparking should happen. Yes, everything outside vascular cambium. But थोड़ा ठहर जाओ. Let's remind ourselves what is present outside vascular cambium. You know what? I'm not going to show you the diagram. Think about it. Vascular cambium के बाहर हमने सिर्फ अराउंड एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की बात करी. But don't forget, मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी. आउटसाइड वैस्कुलर केम्बियम मेरे पास सेकेंडरी फ्लोएम है सबसे पहले. जिसको ये समझ में आया ना राइट नाउ अभी क्या हुआ लाइफ में, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैम ने सेकेंडरी फ्लोएम क्यों लिखा, तो तुम्हें
नहीं समझ में आया, लेट्स एक्सेप्ट द ट्रूथ। उसके बाहर हो भी सकता है बेचारा बहुत ही थका हुआ प्राइमरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम में तो इतने लिविंग कंपोनेंट्स हैं भाई, सो हाउ डू पीपल से बार्क इज अ डेड स्ट्रक्चर? तो वो जो तना है, वो जो जिसपे यू नो पीपल ड्रॉ हार्ट्स एंड राइट समथिंग इन gardens and I don't know, this bark of the tree which is economically very good also. Yeah, we get a lot of stuff from bark, like I think cinnamon sticks are obtained from the bark of the tree. You get medicines also, cinchona and all that. So that is living as well as dead. Primary phloem. Yeah, और उसके बाद मेरी आई कॉर्टेक्स भाई, मिडिल कॉर्टेक्स, जो प्लांट के पास शुरू से प्रेजेंट थी जब वो बच्चा था। और मिडिल कॉर्टेक्स जो प्राइमरी कॉर्टेक्स थी उसके ऊपर आई थी पेरिडर्म, जो 3 कंपोनेंट है। तो ये सारा कुछ बार्क है, ये सब कुछ बार्क है। आई बात समझ में? This is a very, very, again, a twisted question where people go wrong. I've seen so many students going wrong in this. So bark definitely, इसीलिए मैंने आपको पहले पेरिडर्म पढ़ा। Bark definitely will contain periderm. Will also contain everything outside. कहाँ गई हमारी cambium ring? This is the cambium ring. This is the cambium ring. Cambium ring के बाहर whatever is present is your bark. So आशीष, एनसीईआरटी ने ये जो लाइन बोली, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? दिस इज अ हिंट. समटाइम्स एनसीईआरटी विल जस्ट गिव यू द हिंट एंड देन यू हैव टू रियलाइज व्हाट इट्स सेइंग. गॉट इट? चलो, अब प्रॉब्लम ये आई, जरा सोचो, अभी हमने ये पढ़ा कि अगर ये डैमेज्ड एपिडर्मिस थी, यहाँ पे इसके बीच में, दिस इज नॉट हेल्पिंग, लेट मी डैमेज इट. या दिस वाज द डैमेज्ड एपिडर्मिस. उसके नीचे कॉक केम्बियम ने एक सोल्यूशन निकाला कि आई विल मेक वेरी सुबराइज्ड कॉक सेल्स. द प्रॉब्लम इज these cork cells are completely blocking the exchange of substances from the atmosphere to the inside of the stem. अगर ऐसे ही चलता रहा तो inner tissues will not be able to breathe. There is no gaseous exchange. So cork cambium is very intelligent. Plant is very intelligent. Everything is very intelligent. Even a mosquito is very intelligent. ये क्वेश्चन है कि हाउ विल प्लांट्स ब्रीथ? इफ दिस इज जो अब तक हमने पढ़ा है, इफ दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, then how will the plant respire? How will the exchange of gases take place? So cork cambium helps us in this respect. कुछ सेल्स, कुछ पोर्शंस पर cork cambium cork नहीं बनाती है. It forms parenchymatous cells called complementary cells. Called as complementary cells. Very, very important. ये NCERT में शायद मेंशन नहीं है. इनकी नेचर होती है पैरेनकाइमेटस. भाई कॉक केम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसका जो मन करेगा वो सेल दे देगा. अब उस सेल की नेचर कैसी है, पैरेनकाइमेटस है या उसको डेड होना है, वो प्लांट की मर्जी है. सो कॉक केम्बियम, यहाँ पे मैं आपके लिए अच्छे से लिख देती हूँ. कॉक केम्बियम इन सर्टेन प्लेसेस, if you're writing down the notes, forms closely arranged, as your textbook states, closely arranged parenchymatous. और तुम्हें अब तक तो पता लग ही गया होगा कि जहाँ पर parenchymatous cells आते हैं वहाँ कुछ अच्छा ही होता है.
क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स बेचारे सब फंक्शंस कर ही लेते हैं, राइट? सो ताकि गैशियस एक्सचेंज हो, ताकि बिल्कुल ही सिर्फ डेड टिश्यू ना रह जाए, कॉक कैम्बियम फॉर्म्स क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, लिख लो, कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, विद मी ऑन दिस. अब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बनते हैं, दे अप्लाई प्रेशर ऑन एपिडर्मिस एंड फॉर्म्स अ लेंस शेप्ड, लेंस समझते हो ना, लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड एज लेंटिसल. इस लेंटिसल से ऐसा बूढ़ी स्टेम्स में, वुडी स्टेम्स में लेंटिसल्स और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आपको सेकेंडरी ग्रोथ की भी थोड़ी बाद मिलेगा. एज द प्लांट एजेस, as the plant ages. Your textbook says lenticels are seen in woody stems because जब वो और बड़ा होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ अभी शुरू ही हुई है, तो कॉक कैम्बियम को समझ में नहीं आया. It just did what it did. वैस्कुलर कैम्बियम बना, वैस्कुलर कैम्बियम ने जाइलम बनाया. सो यू नो सेकेंडरी ग्रोथ के शुरू की स्टेज में ऐसा नहीं होगा कि लेंटिसल्स बन जाएंगे. When NCERT says lenticels are seen in woody stems, उसका कहने का मतलब ये है, book of less words, कि you know as secondary growth progresses, it takes time. Secondary xylem बनेगा, it बनता जाएगा, accumulate होगा, then it will apply pressure, epidermis damage होगी, इस सब में time लगेगा. फिर कॉक कैम्बियम बनेगी to make up for the damage. फिर उसके बाद कॉक कैम्बियम को ख्याल आया कि नहीं यार, if I keep making कॉक, सब मर जाएंगे, so I have to make सम आउटलेट. तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बनाए. कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स थे लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स. उन्होंने फिर प्रेशर लगाया तो हमारे लिए एक ओपनिंग बनी. अब बात करते हैं, ये यहाँ पे बात खत्म हो जाती है. ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम इज टेकन केयर ऑफ. इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स इज अ क्लैप एंड यू आर डन. उसमें से जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसके लिए मैं जिंदा हूं. ओके, सो नाउ पीपल हु आर पेइंग अटेंशन, कौन है? मुझे पता लग जाएगा तुम्हारी बातों से कि कौन अटेंशन पे करेगा. कुछ लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. लक्ष्य क्या बात कर रहा है यार, यू ब्रेकिंग माई हार्ट. स्टोमेटा स्टेम में यहां पे होंगे, स्टेम की एपिडर्मिस में. लीफ की बात है वो. हाँ, बायोहॉलिक का क्वेश्चन क्या है? आई एम नॉट, आई नीड टू सी दैट कॉमेंट. कैन वी स्क्रॉल अप? बोल रहे हैं मैम प्लीज क्वेश्चन देख लीजिए. मोनिशा इज सेइंग, मोनिशा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई. कैन वी स्क्रॉल द कमेंट्स प्लीज? Bioholic wants to ask some, or Bioholic can type their question again. We just lost your comment. Yeah, मैम रेपायरेशन वाटर प्लांट का भी ऐसे ही होता है बेटा. ओके, थैंक यू. मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन. क्या बोलना चाह रहे हो आप? आर यू आस्किंग अबाउट ट्रांसपिरेशन? रेस्पिरेशन की तो यहाँ बात ही नहीं है. ठीक है, अच्छा लक्ष्य, दैट इज रेस्पिरेशन इज अ वेरी रॉन्ग टर्म. Okay. Monisha, classes will be bilingual, both English and Hindi, because the subject is in English. Can't help it. Hari Prasad Shiva Subramanian, ma'am, what if microbes enter through lenticels? Good question. Somebody is paying attention. Hari, what will happen? I'm just calling you Hari. Yeah, even if some infection enters here, na, to Cock cambium senses it. The plant senses it, and you have to realize that Cock cambium has the ability to form cork, dead cells as well as parenchymatous cells, right? So that infection will have to pass through the barriers. यहाँ पे अगर infection आ गया, if the infection enters, Hari, then cork formation will happen. Plant is intelligent. I can't say this enough. Plant is intelligent. Even a bacteria is intelligent. A virus is intelligent and can destroy the world. People who are asking for English or Hindi,
Classes are going to be bilingual, as is the country. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डाइकॉट रूट की. बहुत ही इजी है. जरा डाइकॉट रूट को थोड़ा सा विल पे अटेंशन टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन द वैस्कुलर रीजन. अब मेरी आई पेरीसाइकिल. ओके, इन द प्राइमरी प्लांट आई हैव द पेरीसाइकिल. डाइकॉट रूट में पिथ इज इनकंस्पिक्युअस, याद है. सो यहाँ पे मेड्यूलरी रेज की बात नहीं होती. आपको अगर याद हो, व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द पेरीसाइकिल लास्ट टू लास्ट क्लास of dicot root, I told you this is most important. This is the most important layer of ground tissue system, of the ground tissue in roots. Why? Because pericycle से lateral roots भी बनती हैं and pericycle takes part in secondary growth. And then I told you please forget it. अब आज देखो कि pericycle कैसे secondary growth में part लेगी. और याद रखो कि हमने पढ़ा था that vascular bundles in root are arranged in radial fashion, in radial alternate manner. यानी कि you have the patches of phloem. ये रहे आपका phloem. These are the patches of phloem that you have, right? And here you have the xylem. अब हमने ये भी पढ़ा था कि डाइकॉट रूट में ना वैस्कुलर बंडल ज्यादा नहीं होते. They're just 2 to 4 tetrarch condition. Yeah. So what we saw that primary xylem, जिसको ये याद होगा मतलब you are on the right track, in a root is in exact condition. कोई है जो मुझे बता सकता है exact condition? That means, I'll only say it, that means metaxylem is towards the inner side, okay, and protoxylem is towards the outer side. अब ये आउटर इनर का मतलब क्या होता है भाई? इनर साइड मतलब सेंटर. यहाँ पे मैं पिथ बोलना नहीं चाह रही हूँ बिकॉज पिथ इज इनकंस्पिक्युअस. मान लीजिए है थोड़ी बहुत, तो वॉट एवर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्गन ना, पिथ रीजन, उसको बोल देते हैं इनसाइड. इतना तो अब तक समझ में आ जाना चाहिए. आउटर साइड का यहाँ पे मतलब है कि भाई पेरीसाइकिल की तरफ कौन है. आर यू विद मी? तो ये है एग्जैक्ट कंडीशन. अब आपकी एनसीईआरटी बड़े प्यार से बोलती है एंड हाईलाइट नहीं करती है एंड वी गेट लॉस्ट इन द थियरी. दिस टिश्यू, दिस पार्ट ऑफ द पेरीसाइकिल, कलर चेंज करने का टाइम, दिस पार्ट ऑफ द पेरीसाइकिल ऑपोजिट द प्रोटोजाइलम will become meristematic to form cambium. Are we together in this? This portion of the pericycle opposite protoxylem. Why does it say protoxylem? Bhai, because protoxylem is facing the pericycle na, metaxylem andar hai. Good. Another thing that we studied कि xylem और phloem के बीच में, xylem और phloem के बीच में the tissue which is present is called as the conjunctive tissue. Pen change करने का time. Conjunctive tissue. ठीक है ना? So this tissue which is right next to the phloem, right next to the phloem, primary phloem, that conjunctive tissue undergoes dedifferentiation and becomes cambium. कंजंक्टिव टिश्यू तो पैरेन, भाई डाइकॉट रूट में तो पैरेनकाइमा ही पैरेनकाइमा है. अगर पैरेनकाइमा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है तो डी-डिफरेंशिएशन होती है. Cool. So now when these two join, the yellow part that you see here is the joined. This sort of wavy vascular ring is formed. दोबारा से यहाँ पे देखिएगा. This is the part of pericycle opposite the protofloem, जो मैंने black से mark किया है. That is opposite protoxylem, not protofloem. Protoxylem, the portion of pericycle, will de-differentiate
and form cambium. Here conjunctive tissue right next to phloem. लिख ही देना आपके लिए, लिख देते हैं. Okay, we'll write it for people who are really serious. क्या लिखना है? Pericycle opposite protoxylem and conjunctive tissue below primary phloem. यहां पे इंट्रा इंटर की बात नहीं है. They will join together and form a wavy vascular cambium. ये हमेशा wavy नहीं रहेगा. As it grows, it will become a continuous circular ring of vascular cambium. चिंता की बात नहीं है. दोबारा देख लो. अब इस रिंग से जाहिर है, इस रिंग से क्या जाहिर है भाई, कि आउटर साइड पे दोबारा से, वहां पे भी यही हुआ था, आउटर साइड पे बेचारा रह गया फ्लोएम और इनर साइड पे क्या रह गया भाई, जाइलम. इस रिंग ने एक डायरेक्शन, इट हैज मेड अ डेफिनेट फॉर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, it has decided that I'm going to follow this pattern, because see, it is going to grow inwards to outwards, inwards to outwards. And how will that happen? Inwards, secondary xylem will keep forming. Same चीजें होंगी, rest everything is same. Secondary xylem will form and outwards secondary phloem will form. Why this happens? Because this is the usual pattern also. मैंने आपको तब भी बताया था, phloem is always towards the outer side, xylem is towards the inner side. So vascular cambium is not disrupting the order, it is following the direction. Are we good? So यहाँ पे pericycle takes part in secondary growth. आगे चल लेते हैं. In the life of a tree, we can estimate the age of a tree if you cut the stem. Come back to the stem part. Come back to the stem part, people. पवन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा. UPSC World class is bilingual. Okay. People, what is dendrochronology? It is the method, it is the branch of science in which the age of a tree, chronology is number. The age of a tree can be estimated by counting these rings. Let's see what these rings are. If I count the number of rings, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I can say कि ये इतना पुराना पेड़ है. But for that, cut the stem. I have to cut the stem. And that is an old stem. A woody stem is what we are talking about. ऐसा क्यों होता है? What causes these rings called as annual rings? जाहिर सी बात है, if every ring is telling me the age, the 1, the 2, the 3, the 4, that means these are formed every year. So what causes the annual rings to form? It is, the answer to that question is seasonal variations. How do seasons cause that? Because seasonal variations impact the activity of cambium. Especially if I say vascular cambium really responds to the environmental conditions along with other factors. अब spring और summer में water availability is high. Water availability is high and overall environmental climatic conditions are favorable. The plant is greener. Not only the conditions are favorable for the tissues to grow, the requirement of the plant is also more. You know why? Because plant photosynthesis कर रहा है भर भर के. उसको optimum amount of sunlight मिल रहा है, temperature मिल रहा है, rainfall मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. So transpiration ज़्यादा हो रही है. अगर transpiration water loss ज़्यादा हो रहा है तो requirement भी ज़्यादा है.
ओके, सो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है. सो ऑल इन ऑल दिस इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग. और उससे ऑपोजिट in your autumn, in your winter, the conditions are unfavorable. The cambium is less active. और water availability उतनी अच्छी नहीं है, climatic conditions are not favorable. Cambium just becomes lazy, सोता रहता है. What does that do? भाई, in the spring season, when the cambium is active, is it written? Yeah, last point. Should be the first point. जब cambium बहुत active होता है तो the secondary tissues it'll form more secondary tissues, and they're not lazy, सो नहीं रहे हैं, they're very active. कोई deposition नहीं हो रही है substances की. So they have wider cavities, they are large in number. अब अगर deposition, सो नहीं रहा है cambium, आराम से बैठा है, there's no deposition. So this wood is lighter in color. Okay, spring wood is also called as early wood. It is light in color, very important point, and the density is lesser density. क्योंकि इतनी conduction चल रही थी, इतना काम कर रहे थे vessels. Xylary elements means vessels and tracheids. इतने actively काम कर रहे थे कि वो मोटे ही नहीं हुए. So ultimately conduction was happening through the wider lumen. Just the opposite happens in winters when the cambium ring is inactive. सो रही है, अरे बाहर मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, I can't divide. There's no requirement, plant को चाहिए ही नहीं, water loss भी नहीं हो रहा है. So that time when cambium is less active, opposite will happen. Less number of xylary elements, less number of vessels. Okay, so these are darker in color. It's written darker in color. I'll just scribble the important questions as bullet points. And higher density. ज़्यादा conduction हो नहीं रही है and the lumen is very narrow. Is that clear, people? So now these will appear as distinctive rings. Cool. So the light will appear as light region of the annual ring, and the dark wood will appear as the dark region. ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी अर्ली वुड, ये हो गई तुम्हारी लेट वुड. यानी कि देर आर टू पोर्शंस ऑफ वन एनुअल रिंग. एक साल में लाइट एंड डार्क ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक rings signify early and late wood. ये मंत्र तुम लिख ही लिया करो, whatever we write in the class. Usually are important questions. With me on this? तो अगर तुम्हें लाइट बैंड्स काउंट करने हैं तो लाइट करो, डार्क करने हैं तो डार्क करो, इट टेल यू. अच्छा, दिस विल बी सीन वेयर सीजन्स आर प्रेजेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स अ गिवन. इफ सीजन्स आर नॉट प्रेजेंट, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वहाँ पे तो ऐसे कोई डिस्टिंक्टिव सीजन्स नहीं है कि स्प्रिंग है, अब ऑटम है. देयर यू विल नॉट, इन दोज ट्रीज यू विल नॉट गेट एनुअल रिंग्स. दैट इज अ कंडीशन. This will be seen in temperate climate. Another thing that happens as the plant ages, यानी कि बहुत साल से सेकेंडरी ग्रोथ चल रही है. सेकेंडरी xylem gets divided into two regions. The central region, वो ध्यान रखो, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीज जिनकी इतनी मोटी मोटी ट्रंक होती है और जो बहुत 100 साल से 50-100 साल से those trees are present, उनकी मैं बात कर रही हूँ. Eventually what will happen? The secondary xylem will get divided into the heartwood and the outermost or the peripheral sapwood. Sapwood के नाम से ही पता लग रहा है, it is conducting the sap. Okay, and heartwood is the darker inner wood. ये बहुत dead हो जाती है. It will not perform the function of sap of conduction. पहले heartwood को discuss करते हैं. Heartwood के जो key points हैं वो क्या हैं? It is a very durable wood.
It is a very hard wood, provides mechanical strength to that huge tree. And इस wood से हमें कुछ अच्छी चीजें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल सकते हैं लाइक टैनिन. क्योंकि देखो इट्स नॉट डूइंग द कंडक्शन, डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्शन. ऑल आर क्वेश्चंस. नो कंडक्शन ऑफ सैप. व्हाट इज सैप? वाटर एंड मिनरल्स मीन सैप. कम ऑन पीपल. नो कंडक्शन. तो अब बैठे बैठे क्या करेगी? इट स्टोर्स सब्सटेंसेस. इट स्टोर्स दीज useful substances, useful for us, just metabolites for the plant, tannins, resins, gums, essential oils and whatnot. अब because इसमें वो sap नहीं है, it is all the elements become dead. It becomes very hard. Most important point is it is resistant to infection. Resistant to infection. यहाँ पे कोई कीड़े और माइक्रोब्स नहीं आते. सो दिस वुड इज प्रेफर्ड टू बी यूज्ड कमर्शियली क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. इसका एक और नाम है ड्यूरामेन. बहुत स्ट्रॉन्ग वुड होती है. कमर्शियली इसको या तो आप इसको एज अ फॉर मेकिंग फर्नीचर या कुछ यूज कर लो, और यू कैन डिराइव ऑल दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Coming to sapwood people, it is the peripheral outer portion of the secondary xylem. आपको पता है when secondary growth starts ना, तब heartwood नहीं होती है. जो relatively younger stem है उसमें heartwood नहीं होगी. This is the aging process people. That is all sapwood to begin with. बाद में जब वो accumulate होता रहता है, the plant realizes कि ठीक है, I can manage with the conduction in the sapwood portion. Heartwood portion just provides a lot of strength. Acts like a pillar for the huge tree, so to say. So sapwood will be the conducting wood. Conducting wood. Okay? यहाँ पे storage नहीं होगी. यहाँ पे microbes attack कर सकते हैं. It is not resistant. Not resistant to infection. So it is not that durable. इसको बोलते हैं alburnum. Alburnum. Duramen from durability, alburnum. It will be the moist wood. That will be a dry, hard wood. This will be a moist wood because it is carrying sapwood. See, in all young trees, in young trees, all wood is sapwood. And sapwood will have the living components. Cool people? So, this chapter, congratulations people who have been regular for completing one of the considered as difficult chapter, anatomy of plants. Those of you who have joined later, all the classes, all the lectures that I have taken are available on this channel. Subscribe to this channel, share it with people who are just not able to get these chapters. Yeah, we're not understanding. We have attended so many classes, we have read so many books, but we are not getting those important points which the textbook is not saying, and if we try to mug up, we're not able to solve questions how much ever we try. So you don't want to be putting 10 hours to the chapter and get nothing out of it. Be smart, put 1 hour, 2 hours watching this class and get all your problems solved. Yeah, people? So smart work and hard work will get you there. I'll see you in the next class. When the next class happens, what is the topic, uske liye stay tuned to the channel. That is the only way. ठीक है? So this chapter is done. इसमें इस चैप्टर में कुछ बताने के लिए है ही नहीं. This is important, this is not important. Each and every word, each and every topic of this chapter can be your future MCQ. मैम हम यूपी के हैं, प्लीज़ हिंदी में बताएंगी तो बहुत मेहरबानी होगी. पवन, मुझे भी हिंदी बहुत पसंद है, बट बेटा इस देश में कुछ लोग सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, तो क्लासेस बायलिंगुअल होती हैं. अ वार्म वेलकम टू पवन फ्रॉम यूपी. What is going to be the next chapter? आशीष, थोड़ी सी मिस्ट्री ज़रूरी होती है. Curiosity propels you in life. लक्ष्य स्पैम मत करो, जाते जाते स्पैम मत करो. Bioholic, there are many other methods, yaar.
Okay, we're done.